Hi, friends, and welcome to this session of yet another explanation of a previous year question of forensic medicine. इस बारी हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में नॉट ओनली नीट पीजी INI-CET बट FMGE एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली jump onto that question itself. The question is 58-year-old man presents with abdominal pain, fatigue, and pallor. He works at a battery recycling plant and also reports memory loss. Okay, on examination, there is foot drop in both lower extremities. Laboratory investigation shows elevated blood lead levels. Which enzyme is affected in the given scenario? So, अगर आप पहले चार लाइन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको शायद ये पता लगाना पड़ता है कि बिकॉज ही इज़ वर्किंग इन अ बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट, फटीक के साथ आया है, पैलर भी है, ये कौन सा इंटॉक्सिकेंट हो सकता है. बट लास्ट वाली लाइन में डायरेक्टली दे ही दिया गया है कि ब्लड लेड लेवल्स बढ़े हुए हैं. राइट. तो सबसे पहले तो आप याद रखिए WHO की रिकमेंडेशन है ब्लड लेड लेवल्स नॉर्मल क्या होते हैं. नॉर्मल इज लेस देन 10 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड. यानी 10 माइक्रोग्राम से नीचे है तो ब्लड लेड लेवल नॉर्मल है, 10 माइक्रोग्राम्स के ऊपर है तो ब्लड लेड लेवल ऊपर है. ठीक है. क्वेश्चन में बहुत सिंपली सी अब बात पूछी हुई है, विच एंजाइम इज अफेक्टेड इन द गिवन सिनारियो. दी ऑप्शंस विच आर गिवन आर ALA dehydratase, uroporphyrin 1 और uroporphyrin 3 और pyruvate dehydrogenase. कौन सा एंजाइम इसमें इम्पैक्ट होता है. ये क्वेश्चन ना क्रोनिक लेड पॉइजनिंग का क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया. काफ़ी मतलब काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा हुआ है. एंड वी नीड टू रिमेंबर दिस आस्पेक्ट ऑफ हीम सिंथेसिस जो भी आप बोर्ड पे देख पा रहे हो. राइट. एंड अगर आप हीम सिंथेसिस के स्टेप्स देखोगे इस बोर्ड में, देर आर टू enzymatic steps which are impacted by lead poisoning. The first one is here and the second one is here. Right. So the first one is right at the beginning, जहाँ पर ALA has to be converted to porphobalinogen by ALA dehydratase. Right. This ALA dehydratase is inhibited in lead poisoning. And the second very important step which is also impacted by lead poisoning is right at the end, where protoporphyrin has to be converted to heme and the reaction is catalyzed by ferrochelatase. Okay. So we have two enzymes. One is ALA dehydratase and second is ferrochelatase, who are going to be impacted, which are going to be impacted in chronic lead poisoning. Out of the two, किस पे ज़्यादा impact होता है? So which enzyme is more abundantly impacted by the chronic lead poisoning? That is ALA dehydratase. The impact is more severe. As a result, the heme products, the raw material forming heme, will not be utilized in the ultimate heme formation in the RBC cytoplasm. So those products of heme will be lying unutilized in the RBC cytoplasm. So if we are going to do a peripheral smear of such a person, if you do a peripheral smear of such a person, what will you see? You will see an RBC in which there are multiple dots present.
multiple basophilic dots present. राइट, ये बेसोफिलिक डॉट्स क्या हैं? वो जो हीम का रॉ मटेरियल है ना, जो अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, जब हम पेरिफेरल स्मीयर में HNE स्टेनिंग करते हैं तो ये भी बेसोफिलिक कलर ले लेता है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज बेसोफिलिक स्टिपल्ड RBC साइटोप्लाज्म. तो हमें पेरिफेरल स्मीयर में क्रोनिक लाइट पॉइजनिंग में जिस आदमी में अनीमिया हो रहा है उसमें क्या पिक्चर मिलेगी? बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ RBC. राइट, तो याद रखने वाली चीज़ें क्या है? दो, ALA डिहाइड्रेटेज इम्पैक्ट होता है, फिरोकेलिटेज इम्पैक्ट होता है, और अनीमिया में पेरिफेरल बेसोफिलिक पेरिफेरल स्मीयर में बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलती है. दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड multiple times in our examination. Don't forget, remember these two very important enzyme name. I'll see you in the next class.